Hello friends, welcome back with another video on our YouTube channel, that is Education Icon, which is a new step towards your bright future. So I hope you all are doing well and enjoying your time in a very fantastic way. So without wasting any time, let's come to the class. In this class, I will tell you the complete 5 days SSB procedure and all details of SSB in this video. I will tell you about screening, psychology, GTO, interview, conference and all the procedure which happens during those 5 days in SSB. So without wasting any time, let's start the class. We will start the class from day of reporting. So this is one of the सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स, दैट इज सिलेक्शन सेंटर साउथ. सो जिन लोगों को नहीं पता एसएसबी के बारे में, मैं उनको थोड़ा बता देना चाहता हूँ. एसएसबी स्टैंड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को या सिविलियंस को कमीशन ऑफिसर के लिए कमीशन करता है और रिकमेंड करता है. तो ये डे ऑफ रिपोर्टिंग है. सो रिपोर्टिंग एट द सेंटर इज यूजुअली 1 day बिफोर डे ऑफ टेस्टिंग. Time of reporting varies from center to center. Sometimes the candidates needs to report on the same day of testing, that is day 1 or stage 1. On the day of reporting, the candidates are required to verify their educational documents. Certain forms and traveling allowance forms are filled. तो रिपोर्टिंग होने के जस्ट बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, एंड जस्ट आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी allotted chest numbers. Like chest numbers will be allotted to you, and once you will get chest numbers, you will send to do your breakfast. So just after completion of breakfast, your testing will start, and testing will start, that means your day 1 start. Day 1 is also known as screening test. So before going to start, or before going to tell you about screening test, let me tell you one thing which is very very important about SSB. Friends, SSB is a 2-stage process, and to qualify for stage 2, a candidate needs to clear screening test or stage 1, that is day 1. Day 1 is very very important guys. अगर आप day 1 को clear नहीं कर पाते हैं, स्क्रीन टेस्ट को नहीं कर पाते हैं, तो आप स्क्रीनिंग, that means day 2 की तरफ नहीं पहुंच पाओगे. So those candidates who are not able to make in day 1, they are sent back to their homes. So guys, it is very very important. Screening is very very important. So do preparation very well and do not leave a single stone unturned for your preparation. So इसी के साथ मैं आपके लिए एक important announcement करने वाला हूँ इसी वीडियो में, and that important announcement is related to your preparation of screening only. So इसी के साथ लगे रहिए वीडियो में और करते रहिए. So let me start about telling about screening test. So the very first test in screening test is intelligence test. In this intelligence test, it's like a reasoning test. It contains verbal as well as non-verbal. So it contains questions, approximately 100 questions, and the timing of those 100 questions is approximately 40 to 70 minutes. So this timing also depends on center to center. So it is not fixed that they will give you only 40 minutes or they will give you only 50 minutes. So it is depend on center to center only. So I have already told you that it contains approximately 100 questions, and timing of these reasoning questions, verbal as well as non-verbal, is 40 to 70 minutes. So just after submission of your sheets, after intelligence test, your picture perception test will start. So in this picture perception test, you will be given 30 seconds. In these 30 seconds, a picture will be shown to you on the screen. This picture may be hazy or clear. It is also depend on the center to center. It is not fixed that you will get hazy picture or you will get clear picture, but you will get a picture and it may be hazy or it may be clear. So this picture will be shown to you only for 30 seconds, and just after picture, your writing part will start, and in writing part you will again get 1 minute. So in these 1 minutes, what you have to do, in 1 minute you have to write the number of characters, theme of the story, or some people say action of the story, and mood of the story. Sometimes people are not able to judge, or sometimes people are not able to perceive the picture clearly, whether the characters are in positive mood or negative mood. Friends, here negative is there, sorry for that. So sometimes people are not able to perceive the picture clearly. They are not able to perceive whether the characters are in positive or negative mood.
So, in this 1 minute, you have to write the number of characters, theme and action of the story, mood of the characters, age and sex of the story. Sex of the main character. So, just after completion of 1 minute, again 4 minutes will be given to you, and in these 4 minutes, you have to write the story. Let me tell you something about writing a story. During the writing of story, you have to keep three things in your mind, that which the picture you have seen, you have to write the past, present and future related to that story. That means related to that picture, the picture which you have seen, उससे रिलेटेड आपको उसका थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट में जो चल रहा है वो, और एक फ्यूचर आउटकम उसी 4 मिनट्स में देना है. एंड वंस द रिटन पार्ट इज ओवर, द सेकंड पार्ट फॉलोज इन विच candidates are told to sit in a semicircular fashion for a group discussion. जब भी आपका राइटिंग पार्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ऐसे सेमी सर्कुलर मैनर में बैठने के लिए कह दिया जाएगा. बिफोर दिस लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस. लाइक अगर आपका राइटिंग पार्ट क्लियर हो जाता है तो आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, और 10 मिनट के ब्रेक के लिए आपसे कह दिया जाता है यू कैन गो टू टी पॉइंट. वहाँ से आप चाय पी सकते हैं और थोड़ा स्नैक्स ले सकते हैं. एंड जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स यू हैव टू अगेन कम इन दिस सेम हॉल, और आप सेम हॉल में बैठा दिया जाता है इन अ सेमी सर्कुलर मैनर, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर विच आई हैव शोन टू यू. सो ऐसे ही आपको सेमी सर्कुलर मैनर में बैठा दिया जाएगा. और उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप होगा इंडिविजुअल नरेशन. थोड़ी सी आपकी ब्रीफिंग होगी बाय द असेसर्स, एंड दे विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट योर इंडिविजुअल नरेशन. जैसा कि आपको इंडिविजुअल वर्ड से ही पता चल रहा है, इट इज़ अ सेपरेट नरेशन. सो यू हैव टू स्टार्ट योर नरेशन लाइक वॉट एवर द स्टोरी यू हैव रिटन ऑन योर पेज, you have to narrate that story only in 1 minute. So sometimes it may possible that some people are not able to narrate their story in 1 minute. So the assessors automatically says next. So they do not get a proper chance to show their communication skills or show their talent. So please guys, I would suggest you that you have to complete your narration of a story only in 1 minute. You can give the crisp of your story so that assessors can get you. And just after individual narration, when the last candidate will give his narration, you have to start your group discussion. Like the assessors will already say that just after completion of last narration, you have to start your group discussion automatically. और लास्ट नरेशन के बाद ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे करके ग्रुप डिस्कशन सारा लगभग 3 से 4 मिनट में ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाता है. सो जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टेस्ट, results are announced and those who do not make it in this attempt are sent back to their homes, and the successful candidates are written for 4 days of detailed assessment. I have already told you that SSB is a 2-stage process. For stage 2 you have to clear the stage 1, that means screening test. सो स्क्रीन टेस्ट में जो पीपल नहीं हो पाते हैं, जो पीपल नहीं रिकमेंड हो पाते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है. और द कैंडिडेट्स हु आर स्क्रीन्ड इन, दे आर रिमेनिंग देयर, मतलब वो वहीं रुक जाते हैं. और द स्क्रीन्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द बायोडेटा फॉर्म्स नोन एज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी. सो इसी के बाद उनको जो स्क्रीनिंग हो जाते हैं उनको PIQ फॉर्म दिया जाता है विच इज नोन एज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी. एंड PIQ इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर मस्ट बी नो कटिंग एंड इनकन्सिस्टेंसी इन each of 2 copies, and PIQ is also basis for the individual candidate interview. इंटरव्यू होता है आपका वो PIQ के बेसिस पर ही होता है. इसलिए गाइज PIQ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल टेल यू इन माई अपकमिंग क्लासेस हाउ टू फिल योर PIQ एंड एवरीथिंग अबाउट PIQ. डोंट वरी अबाउट दोज, बट एट दिस टाइम बस आप इतना ही क्लियर कर लीजिए कि PIQ एक फॉर्म सा होता है, आपका बायोडेटा होता है, उसको आपको भरना होता है, और उसी के बाद आपका PIQ भरने के बाद आपको फ्री कर दिया जाता है, एंड यू कैन गो टू योर separate rooms which will be allotted to you. So this was about the first day, and let's start the day 2. Day 2 is also known as psychological test day, because on this day 2 your psychological test would happen. So psychological test आपके day 2 को ही होते हैं. और first day in psychology test is first test in psychological test is thematic apperception test, which is also known as TAT or picture story writing. So in this test a picture will be shown to you, like this is also as similar as PPTT, and but the pictures which will be shown to you in TAT are
more clear as compared to PPDT. And in this procedure, a picture will be shown to you for 30 seconds only, and just after 30 seconds you have to write your story within 4 minutes. So in these 4 minutes, again just after 4 minutes, again a picture will be shown to you, and again 30 seconds will be given to you. एंड इन दो 30 सेकेंड्स अगेन आप पिक्चर देखिए, फिर 4 मिनट्स के लिए स्टोरी लिखी जाएगी. सो इन दिस सेम मैनर 11 पिक्चर्स कंटिन्यूसली विल बी इन फ्रंट ऑफ यू टू स्टार्ट योर लाइक टू राइट योर स्टोरीज. तो जस्ट आफ्टर 11 पिक्चर्स आपकी 12 पिक्चर्स भी आएगी, बट दैट वुड बी ब्लैंक. हमेशा ब्लैंक होती है आपकी, हमेशा 12 पिक्चर्स आती हैं और 12वीं पिक्चर और 12वीं स्लाइड हमेशा आपकी ब्लैंक होती है. सो जस्ट आफ्टर टेट your next test is word association test. So in word association test you will get a word for 15 seconds. In this time duration the candidate has to write the first thought that comes in his or her mind for that word. So आपको एक सेंटेंस लिखना है, एक वर्ड आएगा आपके सामने 15 सेकंड के लिए और इसमें आपको एक सेंटेंस लिखना है. सेंटेंस should be positive and it should have a meaning. सो ये सेंटेंस लिखना है. उसी जस्ट आफ्टर 15 सेकेंड्स नेक्स्ट वर्ड विल कम एंड यू हैव टू अगेन राइट योर सेंटेंस. सो लाइक इन दिस मैनर ऑल्सो you will get 60 words continuously word by word. Like just after 15 seconds you will get next word. So sometimes it may possible that some candidates are not able to write some meanings or they are not aware of the meaning of certain words. Then they can skip that word and write the next word. So just after word association test, your situation reaction test comes. So in this test, what happens? A situation will be given to you for 30 seconds. Like you have seen picture in front of you, you have seen a word in front of you. So in same manner, you will see a situation in front of you. Like a situation will be given to you, you are going to give your exam and suddenly you see that a child met with an accident. Then you will dash dash dash. Then you have to give your proper response like I will give him first aid, have him evacuated to the hospital, I will go to exam and give exam very well and did well. So this was my personal response, but you can give your proper response whatever you prefer. So this was just a situation, I was giving you just example. So a situation will be given to you for 30 seconds and within 30 seconds only you have to give your proper response. So in this just after 30 seconds next situation will be given to you and next and next and then next. So in this same manner also you will get 60 situations alternatively, means one by one. So just after 60 seconds your situation reaction test is finished. And in this psychological test, last test is self description test, which is the fourth test of psychological test. So it is the last test, I have already told you. So what this contain? This contain about the opinions. Basically, it is a opinion like what your parents think about you. There is first point, what your parents think about you, or what is your opinion, or what your parents' opinion about you, and what your teachers think about you, what your friends think about you, what you think about yourself, and what qualities you would like to develop in yourself. So these are the 5 points which are compulsory and no changes there. These are fixed points and these will come in self description and you have to write about these sentences. You have to write about a passage of 4 to 5 lines for per line, like what your parents think about you, you have to tell what they think about you and like this only. So sometimes it may possible that they give you 6 points and 6th point is that what's your ambition in your life or what's your goal or what do you want to become in your life. That's your last point in this self description test. So this was about the self description test and here our all psychological tests are finished. So this was about the second day and about the psychological test. So psychological tests contain only 4 tests and just after कंप्लीशन ऑफ योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे और आपको आपके रूम में भेज दिया जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट डे 3 एंड डे 4, दैट इज अबाउट GTO टास्क. व्हाई आई एम सेइंग डे 3 and day 4? Friends, GTO task is very very important and it is the only task which happens
for 2 days, that is on day 3 as well as on day 4. So in this GTO task on these day 3 and day 4, the following tests are conducted in this test. So very first test in GTO task is your group discussion. In this group discussion, you will be sitting in the same manner which you are seeing the picture in front of you. So इसी मैनर में आप बैठे होंगे, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा. इस ग्रुप डिस्कशन के भी फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है आपको टॉपिक चूज करना होता है और दूसरा पार्ट होता है आपको डायरेक्टली टॉपिक दिया जाता है. इसमें 2 ग्रुप डिस्कशंस होते हैं. सो लेट मी क्लियर योर डाउट अबाउट दिस. सो ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहला पार्ट होता है आपको 2 टॉपिक दे दिए जाएंगे, वेदर दीज आर रिलेटेड टू नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड यू हैव टू चूज ओनली 1 टॉपिक एंड यू हैव टू डू अ ग्रुप डिस्कशन ओवर दैट टॉपिक. Let me clear one thing in your mind that please do not jingle over any topic or jingle over any others comment. किसी को कमेंट मत कीजिए, पिंच मत कीजिए, कोई डिबेट मत कीजिए. इट्स जस्ट अ ग्रुप डिस्कशन. सो यू हैव टू डू जस्ट अ ग्रुप डिस्कशन formally and friendly. So just after first task, in second task, you will be given a topic and in which there is no choice. Directly आपको एक टॉपिक दिया जाएगा. It may be related to women empowerment or armed forces or it is related to any national or international affair. So आपको टॉपिक दे दिया जाएगा and you have to do a group discussion over that topic. So just after group discussion, your second task starts, that is group planning exercise or which is also known as military planning exercise in Indian Armed Forces. आप जिस मैनर में बैठे हैं इसी मैनर में आपको बैठ दिया जाएगा और आपके सामने एक ऐसा बोर्ड रख दिया जाएगा और आपके असेसर आपको समझा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ स्टिक एंड वेयर लाइक he will explain you each and everything about the procedure and what you have to, how you have to do. So in this test also you will be given approximately 6 to 8 situations and you have to tackle those situations within some time which will be given by the assessor. So उसी टाइम फ्रेम में आपको उन सिचुएशंस का सॉल्यूशन निकालना है और उसके ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन करना है. ग्रुप डिस्कशन करने के बाद आपको एक कॉमन कंक्लूजन निकालना है. लाइक 6 to 8 सिचुएशंस होंगी तो हर किसी की प्रायोरिटी अलग होगी. हम उससे बचाएंगे उससे बचाएंगे. तो उन सभी को आप सभी को एक कॉमन कंक्लूजन लेके आना है. आप सभी को एक कॉमन अपनी सोच बनानी है और विद इन अ टाइम फ्रेम यू हैव टू डू अ प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन एंड अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिचुएशंस. So just after group planning exercise, your third task starts for outdoor things. So that is known as progressive group task. In progressive group task, certain you will be like in this task what you have to do, you have to cross some obstacles. Like this is starting line and here that is ending line. So you have to go from here to here. So it is your dead area. So do not touch any dead area. So it is basically you have to cross these obstacles with the help of some helping material like balli, fatta or rope. That means balli, plank and rope. And you have to cross this obstacle with your whole team. A weight will be given to you and assessor आपसे कह देंगे वो weight आपका एक इंजर्ड पर्सन है तो आपको वो भी साथ में लेके जाना है. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट. लाइक कुछ पर्सन होते हैं वेट को भूल जाते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देयर सोल्जर्स इन वॉर. सो आप उसका बहुत ध्यान रखिए. और इस टास्क के बारे में यही था कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में यू हैव टू क्रॉस सम ऑब्स्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग मटेरियल्स. एंड देन आफ्टर पीजीटी HGT comes, that means half group task. It is the 4th task of your GTO. So in that task what you have to do, you have to cross same obstacles which were in the PGT, but those are different as compared to PGT. But in this the PGT, like the assessor will divide your team into 2 halves. That is you can determine it from the name only, half group task. हाफ ग्रुप टास्क 2 डिवाइड आपके पूरे ग्रुप को जीटीओ आपका 2 ग्रुप में डिवाइड कर देगा और 2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपको आधी टीम के साथ ही वो काम करना होगा. यू हैव टू क्रॉस दोज ऑब्स्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ दोज 3 हेल्पिंग मटेरियल्स. इट मे बी डिपेंड ऑन सेंटर टू सेंटर व्हाट हेल्पिंग मटेरियल you are getting. So just after half group task
individual obstacle comes in count. So sometimes some people or some candidates are not able to get opportunity in the PGT और HGT, लाइक यहाँ पर ग्रुप होता है पूरा, जिनकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती उनकी क्रिएटिविटी दिखाने की, उनका टैलेंट दिखाने की. सो फॉर दैट ओनली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कम इन काउंट to see their courage, see their stamina, and see their proper planning and strategy. So in this individual obstacle, you have to do some running, you have to cross some obstacles, you have to jump, you have to do some monkey crawling, and you have to do some rope climbing. So those are individual obstacles which you have to cross some obstacles within some time frame only. So just after individual obstacles, your next task comes in count, that is GOR, which is known as group obstacle race or snake race. So in this you have to do basically a type of race with your whole group. So with your whole group you have to do a race, and in this you have to hold a snake in your hands, and with that snake in your hand only you have to run for some distance, and you have to cross some obstacles without breaking any rule. So it is also a very beautiful, one of the beautiful tasks of GTO, which I am sure you will enjoy the most. So just after GOR snake race, your next task, that is seventh task of GTO comes, that is command task. As we can know, we can determine from the name only that this is command task. That means in which we are the commander of our team. So the GTO will give us some obstacles to clear, and he will give us two subordinates. So with the help of coordinates and with the help of helping material, we have to cross one obstacle with the help of those obstacles, with the help of those helping materials. But let me tell you something about this, friends. It is a command task, and in which GTO seeks, or GTO is there to see your communication skills or to see your leadership skills. So friends, do not take any type of advice from your subordinates, because it will impact your selection in SSB. So just after command task, lecturate comes in count. So what happens in lecturate? So this is a basically type of procedure during lecturate. Your group mates will be sitting in front of you, and you will be standing in front of your group mates, and in this you have to give a speech. So like 4 topics will be given to you according to level wise, and you have to select any one topic out of 4 topics, and you have to give a speech type lecturate over that topic for approximately 3 minutes. So just after lecturate, these topics are related to your current affairs, are related to knowledge, that means are related to national issues or international issues, and one topic is there which is very simple, that is related to your personal life only, like my favorite hobby, my favorite book, my parents like this only, or my home, my siblings like this only. So just after lecturate, your final group task comes in count. This is the last task of your GTO. So in final group task, this is same as, let me tell you something about it, this is same as your PGT, that means progressive group task. In this you have to cross some obstacles like that of PGT, and you have to do this with your whole team or with your whole group. So this was about your GTO, this was about the day 3 and day 4. So your GTO ends at this time. Now let me tell you about interview. So interview basically are held during afternoon or evening hours on second, third और fourth day. इंटरव्यू बेसिकली आपके या तो दोपहर में होते हैं या शाम को होते हैं, दूसरे, तीसरे या चौथे दिन. जब आपका दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है, so just after psychological test you will be called for your interview, or it may be depend, you will be called on third day or fourth day, it is depend on the assessors only. So आपका इंटरव्यू सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे होता है, आफ्टरनून या इवनिंग में. इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए कुछ बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है. सो जस्ट आफ्टर इंटरव्यू, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 5, दैट इज कॉन्फ्रेंस डे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स. इट्स लाइक अ ड्रीम टू सिट इन दिस रूम. It's like a dream of a candidate to sit in this room, because this is the room which changes the destiny or which changes the fate of a person. So on this final day or on this last day of conference,
all the assessors sit together like in this manner. All the assessors sit together and have a chat on demonstrated performance of the candidate. जो भी परफॉर्मेंस हुआ है साइकोलॉजी में, जीटीओ में और इंटरव्यू में, उस सभी को ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के मार्क डिस्कस करते हैं कैंडिडेट्स के. एंड देन द फेट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर दैट एसएसबी इज डिसाइडेड बाय दीज असेसर्स कलेक्टिवली देयर. सो जस्ट आफ्टर दिस बोर्ड मीटिंग, इसी के बाद हर किसी स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट को बुलाया जाता है रूम में. उसका थोड़ा सा पूछा जाता है लाइक हाउ वाज योर स्टे, व्हाट यू हैव लर्नड, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मेड एंड एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन और नॉट, लाइक दिस. एंड समटाइम्स दोज कैंडिडेट्स विच आर ऑन बॉर्डर लाइन और विच आर अंडर डाउट, तो उनसे भी कुछ सिचुएशंस पूछने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए सब क्वेश्चन पूछते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं. एंड जस्ट आफ्टर द बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी कैंडिडेट इज ओवर, फाइनल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड इमीडिएटली. सो फाइनल डिक्लेयर इसी मीटिंग के बाद डिक्लेयर हो जाता है और द कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू मेक इन एसएसबी दोज आर सेंट बैक टू देयर होम्स. एंड द कैंडिडेट्स और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे बैक फॉर देयर मेडिकल एग्जामिनेशंस which takes about 3 to 5 working days in the military hospital nearby or at a different place. जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जो लोग रिकमेंड हो जाते हैं, वो मेडिकल के लिए वहीं रुक जाते हैं और उनकी चेस्ट नंबर भी चेंज हो जाते हैं तभी की तभी. जो नहीं हो पाते उनको घर भेजा जाता है, उनसे चेस्ट नंबर कलेक्ट कर लिए जाते हैं. एंड दोज हु आर गेटिंग रिकमेंडेड, उनके भी चेस्ट नंबर ले लिए जाते हैं और उन्हें न्यू चेस्ट नंबर विद अ प्लस साइन, दैट मीन्स योर देयर ड्रीम चेस्ट नंबर दे दिया जाता है उन्हें. And this was about the day 5 conference day. So now let me do the important announcement which I was saying about screening, like which I was saying at the time of screening test. So important announcement आपके लिए ये है कि आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ स्क्रीनिंग के लिए, like how to clear screening and how to improve your chances of screening very well. And in this video I can guarantee you that you will have no doubt in the end in that video. So please इसी उम्मीद के साथ लगे रहिए. So this was about the procedure of 5 days and SSB. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इसी के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसी चैनल पर आपकी वोकेबलरी की डिफेंस की क्लासेस चल रही हैं. और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को डिफेंस की, लाइक नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस की एग्ज़ाम्स की, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल्स की, RIMC की, इसी तरह के मिलिट्री स्कूल्स की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो इसी चैनल पर उनके लिए रेगुलर क्लासेस दी जा रही हैं. और दोस्तों आपकी SSB की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैंने वीडियो बना दी है इन विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ टू स्टार्ट SSB प्रिपरेशन एंड व्हाट मिस्टेक्स कैंडिडेट्स डू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ SSB. तो मैंने उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. From there you can go through it and let me tell you about that video that is also very important in order to improve your selection in SSB. तो आज के लिए बस इतना ही. I hope you enjoyed this session well and be ready to improve your chances of screening in my next video. So thank you for watching this video. Please like the video if you like and subscribe कीजिए हमारे चैनल को और एजुकेशन आइकन के बेल आइकन को दबा दीजिए. जय हिंद.